Okay, so welcome back to the another episode of TTG2 Ticket Guys. Here we have with us Divyang Pandya, Ice Spice enthusiast. I know So joke. he's not new to our episode. This time we are going to talk about the same MMA. The only reason why I'm here is because they couldn't afford anyone else. And I'll tell you what my charges are. Basically, I charge them one beat each. कल पहली बार मेरा एक लाइव इवेंट मैंने देखा था जोन्स वर्सेस गान ऑब्वियसली सिरिल गान UFC 285 जोन्स पहले तो उसके फिर भाई The का thing is, like, Sahil was been bugging me like एक महीने से कि भाई मेरे को ये मैच लाइव देखना ही देखना है देखना ही देखना है. I really want to watch like Jon Jones live. And I was like telling him कि भाई ये मैच ना 1.5 मिनट भी नहीं चलेगा. And इसने इतने सारे YouTube पे वो एनालिसिस देख लिए थे. He was like, oh, Ciryl Gane isn't this वो उसको ये करेगा. Bro, that is Jon Jones. Like, भले कितना भी गंदा shape में हो, there's no way Ciryl Gane is ever going to come close to, even like, bro. And क्या हुआ फिर वो मैच? Of course, as expected, Jones dominated the fight. Jones did what he does. लेकिन एक्सपेक्टेड था सिरिल खान का भी कि वो थोड़ा उसका मतलब हाँ, the hype that analyst created about his footwork, मतलब पैर से इंसान मार तो नहीं सकता of course, but एक राउंड तो चल जाता. जॉन जोन्स का एक लॉस है वो भी इसलिए क्योंकि उसका इलीगल एल्बो की वजह से. वो that is something to talk about. So the thing is कि किसके सामने था याद है देखो? अरे एल्बो वाला नहीं, उसके इनिशियली था नहीं Matt Hamill करके था basically. And the thing is that he was dominating the whole fight. मतलब completely पूरा fight. And the only reason why it was classified as illegal this thing. Basically पहले तो बहुत ज्यादा controversy उसकी basis पे. खाली मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या था basically. So there is a thing called 12-6 elbow. It's basically wherein literally straight and तेरा wrist is completely like on top of तेरा elbow. And you're literally hitting it and that's why it's called like 12-6. So basically you're allowed many. ठीक है. 1 मिनट से भी ऊपर ये जॉन जोन्स वाज ऑन टॉप ऑफ दिस गाय मैट हैम. ठीक है. एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली पाउंडिंग हिम. एंड द रेफरी स्टीव माज़गाटी भाई इतना येड़ा बंदा है. वो लिटरली उसके सर पे चढ़ के उसको मार रहा है. जॉन जोन्स केप्ट ऑन लुकिंग एट लाइक स्टीव कि भाई अभी तो रुका दे फाइट, अभी तो रुका दे. एंड ही वाजंट स्टॉपिंग इट. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू दिस थिंग. अभी देयर इज लाइक सो मच कंट्रोवर्सी सराउंडिंग दिस होल थिंग कि मैट ने खुद आके 2-3 महीने बाद ये रिपोर्ट में बोल दिया था कि भाई कि आई डोंट कंसिडर इट एज माई विन बेसिकली. कि भाई मैं मानता हूँ कि वो मेरा ये था. आई लॉस्ट इट एंड आई वाज डोमिनेटेड द होल फाइट बाय जॉन जोन्स. एंड इवन डेना वाइट उसके बाद आके he clarified that. He literally said कि भाई Steve Mazzagatti is basically a toolbox because वो येड़े ने रोका नहीं fight and that fight should have been stopped like 2 minutes ago. So like that's the only loss. And if you have the clip, please like वो clip कर दे नीचे. that elbow, the elbow part. Yeah. And that's the reason why people keep saying जब भी उसको खबीब के साथ compare किया जाता है तो people are like कि अरे भाई but Khabib is undefeated. This guy doesn't have like any loss. हाँ. But Jon Jones, On paper he has a defeat. yeah, but it is not actually. लेकिन ठीक है. लेकिन जॉन जोन्स का हिस्ट्री पूरा इज अबाउट कि भाई ही इज नोन फॉर बीइंग अ डर्टी फाइटर. वो उसका एल्बोज और नी पे वो पता है किक मारता है, नी किक्स. How is that dirty vibes? MMA में dirty का मतलब हाँ. अगर तू बोल रहा basically. So the thing is that अपना this guy Jon Jones has like उसका reach कितना है मालूम है? 84.5 Centimeters. inches. Oh dude. This is his reach, and it's like one of the highest one of the क्या बोल रहा हूँ? It is Almost the the longest highest, reach in US. In US. What he does is basically वो literally खाली तेरे आँख में ऐसा poke कर देगा अपनी ऊँगली से. And that's the reason people आई start. एक्सपेक्ट कि लॉन्गेस्ट तो आडेसाने होना चाहिए. नहीं भाई, नहीं भाई. वो उसका भी भाई उसका हाथ भाई परेरा अपना क्या एलेक्स से कम है उसका तो हाइट. And उसका reach लेकिन वो भी स्किनी है तो लगता है थोड़ा ज्यादा. हाँ, it's because of his build. Also another thing about Jon Jones. तेरे को मालूम है उसने स्क्वाट कितना किया वो? कितना? 222 kgs. 222 kgs. भाई तेरे से आगे है, तेरे से आगे. exactly भाई 20 kgs मेरे से ज्यादा.
And it's not like एक you एक could. एमएमए फाइटर पावर लिफ्टर से आगे Why? But imagine if he starts powerlifting. Tell me he doesn't have like perfect leverages for deadlift. मेरे को बताओ प्रोफेशनल वीक है जैसा नहीं डेडलिफ्ट करेगा प्रोफेसर वीक का सब फील्ड भाई स्टार्ट से ही वो इतना पावरफुल और एकदम भाई the thing is when a fighter is on a winning streak ना वो basically a complete different person होता है like you've seen this time and again like when a fighter keeps winning it you know he's like a complete different person you know and either to on cloud enter nine ऐसा हाँ नहीं it's just The that whole confidence personality is yeah something the whole different. see the thing is that before entering the ring you have to feel invincible ठीक है अगर थोड़ा भी तेरे आर्मर में चिंक आया कि तेरे को ऐसा डाउट हुआ and the fighter like you know smells it भाई there's a chance that he's going to exploit you know so confidence is like one of the most important thing that a fighter needs you know लेकिन and आई थिंक ये लोग जो होते हैं ना 5 इंच स्टिक ये लोग को थोड़ा वो भी टेंस रहता है ना सर पे कि भाई मेरा 5 इंच स्टिक टूटना नहीं चाहिए ये वो yeah and Jon Jones was nobody at that point मतलब उसका नाम तो था फिर भी कुछ फिर भी MMA थोड़ा के सा अंदर होता है ना and like the The underdog. yeah the underdog we'd call him underdog because like this another fighter was winning it on you know such a dominant fashion he was on a five winning streak वरना उसका इतना कुछ होता नहीं because before entering UFC MMA के अंदर Jon Jones का नाम बन चुका था because of his insane reach and how creative he was like you know the spinning elbows like लोगों ने ऐसा कभी heavyweight fighter को देखा नहीं था you know this was pretty common in the fighters with a lower body you know this thing but come out and do it this way heavyweights usually tend to be slow and थोड़ा see the giant thing is the heavyweight division is kind of a sleeper ठीक है बेसिकली अगर उसमें कोई डोमिनेंट फाइटर रहेगा नहीं ना तो देयर इज अ चांस दैट यू नो tickets won't be sold Tickets is something different, but the वो हाँ, इंटरेस्टिंग होती नहीं होती it's like Rey Mysterio versus Great Khali या Rey Mysterio versus हाँ Big Show. देख वो तो जाने दे द थिंग इज कि वो लोग तो उसको प्रमोट भी करते हैं हाँ इतना ज्यादा ठीक है दिस इज अ रियल फाइट उसके अंदर ना बेसिकली this is the real fight हाँ नहीं सही बात है. so it's like as soon as like a heavyweight division gets you know heavyweight division needs one good fighter you know who पहले dominates everything फ्रांसिस ने and and it enters its this thing golden era जैसे कि बॉक्सिंग के अंदर आ गया माइक टाइसन ठीक है then you have your Francis then you have your Jon Jones and kind of Daniel Cormier को भी you can consider it but see the amount of disrespect but the it's Jon amount Jones of भाई disrespect he gets भाई ऐसा भी नहीं you know he's लेकिन one of he the hangs out with Khabib too like, मतलब no Khabib see भी ऐसा see थोड़ी that's है the thing people know him because he hangs out by the new UFC fans who आए हैं like, उन्हें छोड़ the only reason why they know Daniel Cormier is because he hangs out with this thing अपना Khabib why but you don't know how good of a fighter he was अगर कभी भी गोट का conversation होता है Daniel Cormier needs to be a part of it ठीक है and he was a two-time this thing heavyweight champion and people would throw shade at him saying कि basically the only reason why he was a champion was because Jon Jones wasn't present you know and he was just this guy to hold the belt जब तक Jon Jones return आके उससे ले नहीं गई लेकिन वो हुआ भी ना I mean वो हुआ but like still लेकिन जॉर्ज जोन्स का वही है ना annihilate करता है सीधा आके yeah that's the thing he Ciryl Gane को भी doesn't वही just किया win he wins in like a fashion wherein there is no conversation भाई वो तो जॉन जोन्स का बेसिकली द थिंग इज दैट ही स्टार्ट्स यू नो उसके ट्रेनिंग कैंप में वो बेसिकली एक वीक पहले ही स्टार्ट्स पार्टिंग ओके एंड ही इज लाइक कि भाई मेरा कंपटीशन है ही कौन एंड लाइक बेसिकली इफ यू इवन थिंक अबाउट इट हु इज लाइक अ थ्रेट फॉर हिम अभी तक टेल मी वन फाइटर हु यू थिंक इज अ थ्रेट फॉर हिम कीपिंग असाइड फ्रांसिस बिकॉज़ उसका है ही नहीं वो यूएफसी में है भी नहीं अभी नहीं है हाँ बैक इन हिज डेज व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम टेल मी हु इज द वन फाइटर जो उसको थ्रेट लगता था But that's the no thing, one right? right because अगर वो लगता भी है and there is a conversation कि वो you know there is a chance that this guy can win वो लिटरली वो फाइट के बाद यू नो यूजुअली जब चैंपियनशिप फाइट्स होती है या फिर जब डिसीजन पे जाता है ये अपना विनिंग तो देयर इज अ कन्वर्सेशन कि हाँ दिस गाय डिजर्व्स अ रीमैच बिकॉज इट वाज अ प्रीटी क्लोज फाइट बट एवरी सिंगल टाइम जॉन जोन्स एंटर्ड द ऑक्टागन ही मेड श्योर कि ये कॉन्वर्सेशन ही खत्म हो Hmm. कि फ्यूचर में ये कॉन्वर्सेशन आएगी ना कि दिस गाय डिजर्व्स Rematch. and the only close fight as long as I remember was against Alexander Gustafsson और वो match Alexander wasn't a big name तभी
and people like look past him कि भाई ये तो again is going to be a top. Alexander, the one जो Brock Lesnar के टाइम पे था। No, the one जिसने propose किया था octagon के अंदर. अच्छा हाँ हाँ सब ये तो Brock Lesnar के टाइम Not remembering by the fights he fought. Yeah, so that thing it was one of the biggest fight Alexander की career का, and Jon Jones उसके बाद में आगे बोलता भी है एक podcast के अंदर कि podcast interview के अंदर कि I was so like party a week ago. नहीं, I was so tired after the fight or I was so injured after the fight I couldn't even wipe my own butt. इसके trainer ने उसका आगे किया. But yeah, that was a सब फाइटर्स का ना एक एंगल है सारे Guess who wants a jet spray in their bathroom now? अभी भी कम टू इंडिया। लेकिन इस मैच का बात करो ना स्पेसिफिकली तो दोनों का जैसा एक्सपेक्टेड था परफेक्टली वैसा हुआ कि जॉन जोन्स वुड डोमिनेट और सिरिल गान वुड भी थोड़ा लाइट वेटिश क्योंकि उसका टेंडेंसी है कि भले हेवीवेट आदमी है लेकिन उसका जो मूवमेंट है बहुत फास्ट और स्विफ्ट रहता है एकदम भाई वो छोड़ do you want to talk about the kind of shape Jon Jones was in? क्या एक्सपेक्ट किया था जब वो वेइन के लिए आएगा? वेइन के लिए ना थोड़ा मोटा मोटा टाइप मोटा टाइप का फुल्ली ब्लोटेड भाई उसका पेट का. Like I am no one to talk about that. लेकिन ठीक है अभी उसका उसने एक वीक पहले पार्टी किया होगा तो उसमें मेरी दी है But yeah, there were a lot of memes on his legs. वो स्क्रीन पे डाल देता जब मिले थे. हाँ लेकिन ठीक है रिगार्डलेस जैसा एक्सपेक्टेड था प्रिसाइजली वैसा हो लेकिन इतना इतना जल्दी हो गया वो मजा नहीं आया थोड़ा और खींचते तो मजा आता लेकिन उसको कैसा चोक किया वो पकड़ के उसको ऐसा देख के लग रहा था उसको थ्रेट था कि मेरा सर निकल जाएगा वो Yeah, I kind of thought about that. That's the reason he might have like tapped out. ऑफ कोर्स भाई इमेजिन कि तू तेरे पीछे तू एक केज के फिर खड़ा एक आदमी तेरा सर पकड़ के बस खींचे जा रहा है चोक कर रहा है Yeah, that was kind of cute. But ठीक है, sure. That's what MMA is all about. The thing is that see, I wasn't really hyped about that fight. मेरे को मालूम था क्या होने वाला है. And I told like जब भी इसने बोला भी ना मेरे को ये रिकॉर्ड करना. I told him कि भाई there's not going to be much that you can talk about. ठीक है. अगर तेरे को kind of Jon Jones को introduce करना है to these people because see the thing is that Jon Jones deserves to be as big as Conor McGregor in India. ठीक है. Like people need to know what he did. So he लेकिन he might does not have a big start name. throwing some Conor- shit. Conor knew how to sell. Jon Jones didn't need to do that. Connor No, Connor even इतना अच्छा Jon फाइटर Jones- था फिर भी he's known for like as a showman. Yeah, he's a showman. See, those are two different archetypes of fighters. Like Jon Jones is a bully. वो आके तेरे को like literally तेरे को वो केस के अंदर जो भी करता था. And ऐसा नहीं कि he wouldn't like talk shit about it. It's like he would do that in a fashion कि वो तेरे को literally बोलता था कि मैं ये तेरे साथ कर. उसका और डीसी का वो देखा था You know the interview, right? कि ऑन स्क्रीन वो हुआ था उसका। if there's any part of you that believes कि you can beat me, like you're joking to yourself. बोला कि यू कैन Did you see the confidence in his face when he said that? कॉन्फिडेंट ही सॉ डिटर्मिनेशन Exactly, right? ही इज देयर टू किल। हाँ भाई वो डीसी वाला जो था डेनियल कॉर्वेल के साथ वो ऑफ स्क्रीन बोला था डेनियल कॉर्वेल लग रहा था उसकी आंख से कि फट गई उसके अंदर। ठीक है, but स्पीकिंग अबाउट प्रेडिक्शंस hmm. एक अच्छी बात है भाई सही प्रेडिक्शन किया था इस तुझे को पता है नहीं है इसने लास्ट एपिसोड में दिव्यांग ने बोला था कि जेक पॉल जेक पॉल अभी तक रिटायर्ड एमएमए फाइटर्स के साथ फाइट करता है लेकिन जब वो किसी रियल बॉक्सर के साथ फाइट करेगा तब देखते हैं क्या होता है और अभी टॉमी फ्यूरी के साथ जो The thing is, the thing is, we cannot even call like Fury a proper fight. ठीक है. सेमी प्रो And see, okay, I called it out. ठीक है भाई. Whenever I ever been wrong about anything, मैंने तेरे को ठीक है. There was a guest on this episode. मैंने उसके बारे में भी इसको बोला था. Was I wrong? चल, let's not go there. But the thing is, he was जब भी ये टॉमी ने फाइट लिया था, there was no way he was going to look good कोई भी सिचुएशन में unless वो उसको नॉकआउट करता. ठीक है. And his whole family was against him taking this fight. बट उसने फिर भी लिया. ठीक है. एंड ठीक है, लाइक अपना जेक हारा बट
you have to give credit where credit is due. He held his own against like a fighter who was beyond his reach पहले तो क्योंकि usually जितने भी fighters जेक ने fight किए हैं didn't have the reach that Tommy did, ठीक है, और उसको हमेशा वो advantage मिलता था. यहाँ पे वो केस नहीं था, and it just looked bad for Fury because he the kind of fighting style Jake has, उसके अंदर he is a brawler, ठीक है, वो तेरे को chances दे रहा है उसको knock out करने के. And उसने like land भी किए थे कुछ shots, but even after that he couldn't knock him out, ठीक है, and that was the only outcome that would favor Tommy, but नहीं हुआ. लेकिन टॉमी वर्सेस फ्यूरी, अरे जेक वर्सेस टॉमी का फाइट एक बार एनालॉगस बोल सकते हैं कॉनर वर्सेस मेवेदर को. Let's not go there, but the thing is, what this fight did was इसने ना, it actually did, it in long term is going to benefit KSI versus the Jake Paul wala super. Because like, KSI इसके चलो ना see the thing is, इसके कोई भी conversation हो ही नहीं रहा था कि that everyone agreed to the fact that Jake Paul is in a better shape, is a better boxer than KSI 100%. ठीक है, because वो ज़्यादा Andrew Tate. because he is in touch with boxing इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा वो fight कर रहा था, so there's 100% chance कि he has even has money, तो उसको पैसे के लिए वो कर रहा है. money, पैसा but कुछ भी. KSI also has that. KSI UK के अंदर के भी he पास can hire like best of the teams या फिर gyms. But the thing is, now they're kind of equals. अभी like this fight really exploited all the holes that Jake Paul had in his game. ठीक है, like इसके पहले वो इतने chances दे नहीं रहा था. ठीक है, because he was doing that in such a dominant fashion and he was constantly knocking people out. Okay, this fight went to its length. So it's like we saw a lot more in his whole game, and like this really helps KSI, and this really helped the people, और ये उसके sales भी बढ़ाएगा because now the chances are equal. ठीक है, पहले like it was all Jake Paul, and I 100% agree with that क्योंकि Jake Paul ज़्यादा in touch था with box, and the experience in the ring is very very important for you. ठीक है, like to spar कितना भी कर ले, but unless you're actually getting into the ring and fighting people, that experience is completely different. लेकिन जेक पॉल की वजह से एक बात तो है कि यूट्यूब बॉक्सिंग को थोड़ा पुश मिला है. Boxing was a dead sport before like this guy entered. और तू Jake Paul की क्या बात कर रहा है? Who started this? Tell me who started the YouTube boxing? Who started? KSI. He was the first one. But this is going to look very bad तेरे खुद के episode से. KSI was the first fighter to do that, right? It was against this guy अपना क्या नाम था उसका shit. उसका अभी उसके साथ brawl भी हो गया था. KSI का उसके साथ in his recent fight. Joe Weller, yes, Joe Weller. Why KSI is the reason why this whole thing started. And उसके बाद ये अपना लोगन का ये सब हुआ था, उसकी वजह से he was completely like क्या हुआ था? the incident suicide forest वाला. अच्छा, लोगन वाला. भाई लोगन का career was completely हाँ, dead. पता. And that's when KSI called these guys out. They want to fight him. Even his dad Greg Paul. So basically उसने revive किया लोगन पॉल की. Logan agrees to that. And that's the reason why उसने Prime में उसको partnership में लिया था. Because he's like, he saved my career. Now I want to make him a lot of money out of this business. And that's the reason why they started Prime. लेकिन भाई प्राइम की. But तेरा point 100% correct है कि they kind of saved boxing. Because boxing was such a dead sport like वो time पे. अभी people are actually like अभी फिर भी pay-per-view sales कम हो गए हैं. But still, it's a lot more in conversation than it was. लेकिन अभी फाइटिंग की बात करें तो नॉर्मल क्राउड डजंट केयर अबाउट की बॉक्सिंग या एमएमए. Yeah, सबके दिमाग में वही है कि यूएफसी. Yeah, see, that's what I told you in the last episode. Jake Paul definitely brought, a lot of casuals in the sport who weren't involved, and who only knew few names in the sport, who weren't like actually involved. Yeah. So that's a great thing that he did for the sport. And Jake Paul and KSI, people like him had already a huge amount of following. हाँ, they definitely. Following को लेके आए into boxing and all. But I think like ठीक है. जेक पॉल का तो अभी एमएमए डेब्यू भी कर रहा है ना अभी तो. Yeah, कोई तो किसी और में. I don't really follow him that much. भाई मैं खाली वो हारा वो दिन बहुत खुश था. उस रात को 2 बजे तक. But
But yeah, it's like he did good. वो fight के अंदर. He Coming back, definitely exceeded the expectation that people had. उसके अंदर. ठीक है, वो तो पक्का था कि ये हारने वाला है. हारने वाला. But कैसे हारा? That is Hmm. important. And I think he did pretty good. Coming back to UFC or MMA, we are going to witness a bigger rival, not bigger rivalry, but DC से तो अच्छा है. DC versus A Jones से pretty big. Okay, so you're talking about the Alex versus Izzy, right? हाँ. Okay, so I've been like very, very excited to talk about this thing because by the amount of, delusion that Izzy is फिलहाल उसके अंदर, he is not ready to accept that he lost the fight fair and square. वो ready है accept करने के लिए कि मैं हारा. But कौन सी conditions पे? कि भाई I वो was not fully हाँ fit and the only reason why Alex had थोड़ा सा भी chance was because मेरा perennial nerve damage था, मेरा knees ठीक नहीं था. He He's ultra fit. ready to give 3 million to anyone. 3 million to me, bro. $3 million. He publicly said in an interview कि भाई I'm willing to give 3 million to anyone who proves that I am on steroids. Bro, look at your move, bro. भाई फाइनली तेरा नया कैमरा आएगा. मैं कैम स्टूडियो इमेजिन कर रहा था $3 million में तो कर ही पाएंगे उतना कुछ. Yeah, so the thing is I really wanted to 3 million में अपन UFC स्पॉन्सर करेंगे. नहीं 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 यार ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया. UFC इंडिया वाला कर सकता है. इंडिया वाला कर सकते हैं. Yeah. And should ओन Jyoti ओन बनाएंगे. कर सकते थे $3 million. I really wanted to break down that fight, like starting say, because like the amount of analysts that got it wrong, like वो लोग literally Alex को कोई credit नहीं दे रहा है. Hmm. कोई भी Alex को credit नहीं दे रहा है. The only they like कि भाई the only reason he won was because कि उसने fifth round के अंदर इतने थे punches land किए lucky, ठीक है. Hmm. And like it is lucky that first round के अंदर he survived like the Hmm. bell because जैसे वो उसको ये वो hit हुआ नॉकआउट था. होने वाला था. Yeah, I mean ठीक है, that was a luck, but what people don't realize is कि वो first उसने round के अंदर क्या क्या किया था. See, the thing is that okay, let's talk about what Izzy did like in the fight and let's give him his credit of what he did. ठीक है, he outboxed Alex, ठीक है, जो बहुत difficult है करना. See, he outboxed Alex, which is very difficult, जो किसी और ने किया नहीं है, ठीक है. And his whole focus during the training camp was to outbox him, ठीक है, and try to take him down to the ground and grapple with him. क्योंकि Alex grappling बहुत ज्यादा weak है, and that's the only way you can like get into this thing. So like he landed so many punches उसके ऊपर. And another thing is the way Izzy was fighting, वो बहुत ज्यादा लाइक डरा हुआ था उसके लेफ्ट हुक से, ठीक है. And his hand was like stuck right here constantly, and the way he was moving, everything that he was doing, वो constantly डर रहा था वो लेफ्ट हुक से. एंड उसने वो अवॉइड करने के चक्कर में ना इतना ज्यादा उसका ये गेम खराब कर दिया. सी द थिंग इज इजी व्हेन ही इज बीइंग क्रिएटिव, ठीक है, जब उसको डर नहीं है सामने वाले का साथ, ठीक है, व्हेन ही डजंट हैव एनी थ्रेट. एंड वी सॉ दैट इन द फोर्थ राउंड के अंदर Alex was very tired, ठीक है, and ऐसा literally दिख रहा था कि he's out of the fight अभी. Like he's not in the shape to continue the fifth round. I don't know fifth round में उसको क्या हुआ, what got into it, and he like completely looked like a different fighter. But the thing is, fourth round के अंदर Izzy won the fourth round. Why? Third round तक the fight was pretty equal, ठीक है, दोनों like साथ में ही चलते थे, the points were equally distributed वो time तक. Fourth round के अंदर क्या हुआ? Izzy knew that this guy is tired अभी, ठीक है. I can do my thing अभी. I don't have to be worried about the left hook. अगर वो left hook आया भी तो उसके अंदर उतना power रहेगा नहीं कि वो मेरे को knockout करेगा, ठीक है. And the amount of jabs that he landed उसके अंदर, and especially one of the things that he did उसके अंदर was कि so literally basically what his game was कि वो constantly अंदर आता था and he would like jab him. And उसने already 3 jab land कर दिए थे, ठीक है. And the creative Izzy that wasn't showing up in that fight, वो फोर्थ राउंड में शो अप हुआ था. What he did was उसने फेक जैब किया, ठीक है. एलेक्स ने उसका हाथ फेंका, उसने लिटरली उसका हाथ पकड़ा, नीचे गया, and then he landed the cross. And that was pretty good, and that was the Izzy that could have defeated
Alex. Throughout अगर वैसा रहा हो. Throughout अगर उतना creative Throughout at होता था. least for another round, the fifth round. Yeah, अगर fifth exactly, round में भी वैसे रहा exactly. होता And तो the thing is, definitely he the kept on complaining कि मेरा perennial nerve ठीक नहीं था. But लेकिन वो I think if इसलिए you ना. have so you know, survived so four you know, rounds no, of the a thing is, match, then the thing is, do you know what perennial nerve does? नहीं ना, बेसिकली अगर तेरे को पेरेनियल नर्व का डैमेज हुआ, बेसिकली वो ना तेरे नीज के नीचे का जितना भी लेग होता है ना, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है. अगर तेरे को वो डैमेज है थोड़ा भी, तो तेरा ना लेग ऐसा ड्रॉप हो जाता है कम्प्लीटली. यू हैव टू वॉक लाइक दिस. वो लोग पता है फ्लॉपी लेग. अच्छा हाँ जब वो That's snap how हो जाता है हाँ, तब. that's how you walk. But throughout उसका फुटवर्क बहुत ज्यादा था. And the हाँ only time he was stumbling, he was like कि मैं पूरे फाइट में मैं स्टम्बल कर रहा था. पर भाई the only time he was stumbling was जब भी तेरे को. Yeah, so coming back to the Izzy wala fight, I have really been wanting to talk about it because it's like post fight ना जो Izzy दिख रहा है अपने को. See, इसके पहले भी it's not like he didn't lose any fights, but whenever he lost or the fights that he did, he accepted कि भाई see you know about the post fight interview that he did कि I've lost in life, I've lost in तो ये क्या है, ये तो फिर भी ये ठीक है. Philosophical. See, that's the kind of things that you expect from him. But ये fight के बाद it's like his ego has been hurt इतना ज्यादा कि he is not ready to accept कि वो हारा है और fight fair and square, ठीक है. लेकिन वही तो रीजन है ना, क्योंकि आई थिंक इसका ईगो इसलिए इतना हर्ट हुआ है क्योंकि उसका पहले से राइवलरी चल रहा था. Also, Since also, Kickboxing also, time. also, like I wanted Alex to win, ठीक है. But at the same time, ना मेरे को sort of sympathy आने लगी थी for Izzy. Why? Because the amount of edits जो बन रहे थे, भाई मैं थक गया था देखिए. ठीक है, we get it, this guy has knocked him out cold. देख लिया हम लोग ने. Constantly मेरे पूरे एक महीने तक मेरे फीड में वही का वही आ रहा था. And you know why this would affect Izzy a lot more? If you know Izzy even a little bit, you know कि वो internet कितने ज्यादा memes. भाई एनी गुड मीम जो तेरे को दिख रहा है ना, उसके लाइक्स पे जा. इजी ने ऑलरेडी लाइक किया हुआ है. ही इज द इंटरनेट किड एंड हाँ. एवरीवन इन द यूएफसी नोज दैट. नाउ इमेजिन खुद का every humiliation single day, होता है. every single day you wake up and you log into your account and this is what you see constantly. You've been constantly reminded कि भाई इसने तेरे को नॉकआउट कर दिया है, इसने तेरे को नॉकआउट कर दिया है. So I think it got a lot, मतलब ठीक है, उसके ईगो पे बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था. वो दिख रहा था, वो दिख रहा था. Even in the pre-fights when he was like trash talking, उसका trash talk wasn't at the level that it usually is. भाई literally बोल रहा था कि I'm going to leave you frozen like Elsa and like so the amount of cringe that I Fighter is a princess, already is a princess. yeah exactly. So it definitely affected him a lot more and वो पूरा ईगो पे आ गया था. And this is the worst thing that could have happened इतने सब के बाद कि again he lost it. And ये decision पे नहीं गया था, ये literally knockout हो गया था, ठीक है. एंड ही कंप्लेन्स कि भाई ये अर्ली स्टॉपेज था, रेफरी का गलती था. आई वाज स्टिल लाइक फाइन. बट मैंने वो लिटरली स्लोमो में 15 से 20 बार देखा हुआ है. दैट गाय वाज नॉक्ड आउट कंप्लीटली. पार्ट जहाँ पे केज के अगेंस्ट है और वो मार खाए. हाँ भाई, वो लिटरली क्या मालूम कैसे वो अपने लेग्स पे था दैट होल टाइम, बट ही वाज नॉक्ड आउट कंप्लीटली. लाइक वो आउट कोल्ड, मतलब था ही नहीं उधर. मैं वो लिटरली लेफ्ट साइड पे किसी को रीच कर रहा था, जो बंदा था ही नहीं. उसको लिटरली लग रहा था कि एलेक्स उधर है, तो उसको ऐसा चिपकने जा रहा था, बट वो था ही नहीं वहां. एंड देन ही हैज द ऑडेसिटी टू कम ऑन ये हवानी का पॉट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गाय हवानी भाई, ये इतना ज्यादा स्लाइमी पीस ऑफ शिट है. वो बेसिकली हर चीज को, अगर तो उसके इंटरव्यू पे जा रहा है ना, ही बी योर यस मैन. कुछ भी तो बोलेगा, ही अग्री टू. तेरे को इतना चने के झाड़ पे चढ़ाएगा और इतना तेरे को डिल्यूजनल बना देगा. एंड उधर जाके इजी भी कम नहीं की, उधर जाके वो अपना रोना चालू कर दिया कि मैंने फाइट हारा. द ओनली कंडीशन दैट ही इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट ही लॉस्ट इज कि लाइक कि एलेक्स को इतना भी चांस इसके लिए मिला बिकॉज मैं फुली फिट नहीं हूँ, ठीक है. एंड it takes me back to the same thing that Paulo Costa did पहले, like after fighting Izzy. भाई वो तो अपना कुछ something happened to me before the fight and I cannot tell you what. like वो क्या ही कर रहा था. See, yeah, so that's the same thing that ये अपना Izzy started doing, ठीक है. And he constantly keeps complaining about how his perennial nerve was damaged, how his knees weren't like in a good shape. ठीक है. एंड द थिंग इज कि मेरा ये इतना ज्यादा ये हो गया था, क्या बोलते हैं, मेरा फुटवर्क इतना ज्यादा नहीं था एंड आई केप्ट स्टम्बलिंग इन द फाइट. बट भाई द ओनली टाइम यू स्टम्बलिंग वाज जब भी तेरे को लाइक मुक्के पड़ रहे थे. लाइक लिटरली एलेक्स शॉट लैंड कर रहा था, तेरे पड़ रहे थे और तू बाद में स्टम्बल कर रहा था. सो आई डोंट थिंक सो दैट
your knees or your perennial nerve was like the An issue. reason to blame. And मेरे को तो ऐसा कुछ symptoms दिखा भी नहीं था कि perennial nerve damage हुआ उसका, but still he kept on complaining about लेकिन that. उसके बाद पता है वो पोस्ट फाइट का एक इंटरव्यू में कैसा आया था वो फर का कोट वोट पहन के पता नहीं Third, क्या by कुछ he's करके आया embodying, था by his ego is hurt completely hurt हो चुका है क्योंकि उसका एक आपको क्योंकि वो किक बॉक्सिंग में सिख No, हुआ था ना the thing is that when he was before like Alex entered like UFC, हाँ this guy was asked about कि भाई this is your only loss in this thing और तू UFC में आने से पहले इससे हारा था. So do you want to talk about him? So he's like कि I'm going to be a UFC champ और मैं तो मतलब इतने सारे fights करूंगा ये कोई बार में बैठा रहेगा और ये complain करेगा कि see this is the guy I defeated like 2 times and shit like that. So ये सब वो कर चुका है पहले कीड़े इसके लिए उसके ego पे इतना आ रहा है that usually इसके पहले whenever he talks shit, he has been able to, back back it it up. up. इस टाइम नहीं हुआ ये. इस टाइम it completely fell on his face. ठीक है. So I think he's hurt. His ego has been hurt a lot, and we saw that in the fight. ठीक है. So Easy का game plan has always been kicking to the leg and लोगों को stop कर दो कि वो move forward करें, and then he exploits the reach advantage that he has, and he constantly keeps striking, moves out of the way, and that's how he complete fights all the time. बॉक्सिंग इधर इधर नहीं लेग किक की भी बात कर लेग किक्स आर हिज बिगर थिंग तो बेसिकली वो पहले ही तेरे लेग किक को ये कर देगा सो नाउ तू आगे मूव ही नहीं कर पाएगा बिकॉज कॉन्स्टेंटली यू फियर दैट कि भाई ये फिर से मेरे को पड़ेगी पावर एंड दैट्स हाउ ही stops his fighters from moving forward people who are fighting against him so इधर like Alex completely neutralized it और वो काउंटर भी कर रहा था उसका so the first round so I see so many commentators जिन्होंने ये नोटिस किया ही नहीं था कि इजी ने अपना एलेक्स ने क्या किया वो फर्स्ट राउंड के अंदर so not only did Alex send out a message कि भाई I am no Michael I'm no Marlon Vittori I'm no Yoel Romero I'm no Paulo Costa कि तू मेरे को constantly पाव पे किक करके मेरा मूवमेंट स्टॉप नहीं करेगा I am going to keep coming to you and you're the one who's going to have to defend ठीक है एंड उसने लेग किक्स उसके सारे चेक किए सो बेसिकली टू चेक समन्स लेग किक इज कि तूने उसको ब्लॉक किया सक्सेसफुली सो नाउ समवन थ्रोइंग अ जैब एंड यू चेक Okay. वो लैंड होने नहीं दिया हाँ. एंड ही लैंडेड इट एंड ही काउंटर्ड इट विद हिज ओन लेग हाँ. किक ठीक है एंड हाउ यू कैन सी कि इसका ईगो हर्ट हो रहा है इज कि एवरी सिंगल टाइम एलेक्स लैंडेड अ किक आदिसाने वांटेड टू लैंड हिज ओन ऑन हिज हिम ठीक है वो कॉन्स्टेंटली किक फॉर किक जा रहा था जैसे जस्टिन गेची वेंट बट द थिंग इज कि यहाँ पे उसको रीच एडवांटेज नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी ठीक एंड दैट्स समथिंग दैट really bothered him throughout the fight और second thing he was afraid of his भाई this thing left hook वो constantly उसके बारे में सोच रहा था और उससे डर रहा था कि भाई इसका लेफ्ट हुक पड़ेगा मेरे को and that ruined his game completely ठीक है easy when he's being like creative ठीक है जब भी वो confidently ये लैंड कर रहा है शॉट्स अभी ये इजी वॉज सो स्केर्ड ऑफ द लेफ्ट हुक कि उसने उसका मूवमेंट पैटर्न ही कंप्लीटली बॉक्सरिश कर दिया था ठीक है एंड एलेक्स एक्सप्लॉइटेड इट वो क्या करता था वो कॉन्स्टेंटली उसको फेक्स देता था लेफ्ट हुक के एंड देन यूड लैंड अ बॉडी शॉट या फिर अ बॉडी किक एंड ही न्यू दैट ये हो रहा है एंड अनदर ब्रिलियंट थिंग दैट एलेक्स डिड इन दैट फाइट जो लोग उसको क्रेडिट नहीं दे रहे फॉर वाज कि एवरी सिंगल टाइम इजी ट्राई टू grapple him or take him down to the ground what this guy did वो position change करता था and he would punch and get the air out of his stomach ठीक है basically every single time अगर ये तो powerlifting करता भी है थोड़ा बहुत so कि अभी थोड़ा ही है क्या ही बोलो भाई see the thing is that usually whenever you're trying to like power your way through या फिर try to lift anything तो usually क्या करता है is you breathe in and तू ब्रेस करता है ठीक है यूजुअली टेक डाउन के अंदर भी वैसा ही होता है now what this guy did was he is constantly अगर वो ऐसे पकड़ रहा है उसको तो he is constantly like punching his stomach or his body and getting the air out of it तो वो एनर्जी completely drain कर रहा था उसकी constantly and that's how he tackled it क्योंकि एलेक्स का grappling is not that good अगर this fight would have gone to ground it wouldn't have been in the favor of Alex ये 100% easy लेके जाता ठीक है and like Izzy knew this so constantly वो वही try कर रहा था but this is how he countered it and it was pretty brilliant and this is something that not a lot of commentators were giving him credit for वो constantly यही कर रहे थे अगर Izzy like
शॉट मारने भी जा रहे, सो ही डिड अ लेग किक फर्स्ट राउंड के अंदर, एंड वो लैंड नहीं हुआ, उसने कंप्लीटली क्लीनली ये कर दिया, एंड कमेंटेटर्स वर लाइक हाइपिंग अप कि क्या लेग किक था, क्या ये था, क्या वो था, बट वो लैंड हुआ भी नहीं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आई सी फाइट के बाद में, कि आई सी लाइक पीपल थ्रोइंग शेड एट एलेक्स कि भाई ये उतना अच्छा फाइट था भी नहीं, लाइक, एंड ही वन इट बिकॉज खाली वो फिफ्थ राउंड में उसने लाइक लकी शॉट्स लैंड कर दिए, बट दैट वाजंट द केस। बट लकी शॉट्स लैंड करने के लिए 5th राउंड तक तो जाना तो पड़ा ना। एग्जैक्टली मतलब दोनों के पास थी, जैसे इजी Okay, so was what? afraid of the left hooks Coming. and Alex was afraid of the grappling part, but Alex overcome it. Exactly. So now what this fight did was कि इसने ना रॉबर्ट विटेकर को बहुत फायदा दे दिया. So Robert Whittaker is like the number 2 या number 3 contender फिलहाल. I don't really know. लाइट वेट के लिए हाँ, नहीं, ये मिडिल वेट की, ओके मिडिल जिसमें फाइट हो रहा था. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलेक्स भाई, तेरे को लगा किसी एंगल से कि वो मिडिल वेट फाइटर है? डोंट यू थिंक ही बिलोंग्स इन हेवीवेट? For some, bhai, I don't know how he managed to like get under the weight class, but I don't think so that the size that he is. डीसी था क्या वो नहीं, टावल डीसी तो, वाला अबे द डीसी तो फिर भी नहीं, नहीं वैसा कुछ नहीं किया उसने भाई, तो मैं बोल रहा हूँ आई डोंट नो हाउ ही मैनेज टू फिट हिमसेल्फ अंडर दिस वेट कैटेगरी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ही बिलोंग्स टू दिस वेट कैटेगरी. वो 100% है. अरे हर कोई फाइटर आगे बोल रहा था, बिकॉज दे हैव हंग आउट विद ये अपना इजी, ठीक है, एंड दे नो हाउ बिग इजी इज, लाइक ही इज नॉट अ बिग गाय, बट इन टर्म्स ऑफ हाइट इज प्रिटी, बट ये तो उससे भी ज्यादा उसको भी टावर कर रहा था, एंड ही मेड लाइक इजी लुक स्मॉल, एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट डिडंट गो इन इजी's favor, because he didn't have the reach advantage that he usually does, you know, and he wasn't being able to like stay in the middle of the ring. वो constantly fence के against उसको push कर रहा था, and Izzy was the one who was defending himself, you know. So yeah, I think this was one of the major reasons why. So okay, I was talking about the Robert Whittaker thing. So why this is really huge for Robert Whittaker is, अगर ये next fight Pereira against वापस जीत जाता है, ठीक है, तो Robert Whittaker gets chance, and Robert Whittaker का ground game, against Pereira. yeah, against Pereira, he gets a shot, which he totally deserved, because Izzy के साथ उसकी पहली fight में भी it was very controversial how like judges gave like Izzy the victory, because according to me I think Robbie won, but the thing is in this championship fights usually क्या होता है, अगर there is even a slight of doubt, तो वो usually benefit of the doubt इसको देते हैं, fighter जो defend कर रहा है अपने बेल्ट को, so usually वो champ को एक count करते हैं कि भाई he was the one who won. So Robert Whittaker gets his shot if Alex wins, और अगर Izzy wins तो फिर भी again उसको मिलेगा ही मिलेगा चांस, ठीक है, या तो फिर रीमैच होगा, whatever it is, but if Alex wins तो 100% Robert Whittaker को चांस मिल रहा है. And the thing what this fight did was it showed कि ये लोग का कितना दोनों का गंदा ग्रैपलिंग है. एलेक्स का भाई, एलेक्स का इतना गंदा ग्रैपलिंग है, अगर थोड़ा भी कोई डिसेंट ग्रैपलर होता तो इतना इजीली वो उसको मक्खन गेंद से उठा के नीचे पटेंगे. And if I want to make a prediction, if like Robert Whittaker gets a shot, और गलती से भी Robert Whittaker ने उसको टेक डाउन कर दिया, that fight ends right here in the first take, 100%. But the thing is कि वो करना बहुत difficult है, because the reach advantage that this Alex has against Robert Whittaker, and Robert Whittaker has been knocked out a lot of times, so I don't know कि उसका वो chin है पहले जैसा कि नहीं है, because what वो तो फिर अभी उनका ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड. No, the training part is different. But once a fighter gets knocked out now, उसके बाद उसका chin, see, there's a saying कि even the strongest chins wear out eventually. ठीक है, तो कितना भी तेरा strongest chin है, अगर तेरा defense अच्छा नहीं है and you keep taking the shots, like take example of Tony Ferguson. Tony Ferguson के साथ क्या हो रहा है? He's constantly being knocked out, and it's very sad. Like, for me, honestly मेरे को तो देखा भी नहीं जाता, मैं अभी उसके फाइट देखता भी नहीं हूँ, because I honestly start crying भाई, क्योंकि I have seen this guy Tony in his prime when he was like bullying every single one that he was fighting. that's the Batman saying. Right, You either that's when you either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. thing is उसने, ठीक है, वो भी that's a completely different topic. If you want to talk about it, वो अपन next episode में cover कर सकते हैं, because it's a very very vast topic and I have a lot to say about that. But coming back to the fight, in the rematch, I think Izzy wins. That's the prediction I want to make. Easy wins. Izzy wins. Yeah, Izzy takes it. जितना भी Based on the fact that he left hook वाला का कुछ करे.
और हाँ, ग्रैपलिंग फटाफट करे. the thing about Izzy का ना fight IQ is a lot. अगर वो अपने ईगो को साइड में रख देगा and if he goes back to the drawing board and understands हुक का वो डर भी साइड में रखे. हाँ, that's everything, the that's what thing. I'm talking about, the fight IQ. So if you have a good fight IQ ना और तेरा ईगो नहीं है एक्सेप्ट करने की मैं हाँ इधर इधर मैंने गलती की थी and if he goes back and studies it अच्छे से क्योंकि see he breaks down a lot of fights as well on his YouTube channel, right? You know that. So if he does that, I think it goes in his favor. अगर वो improve करता है तो especially he has to stop being scared of the left hook. Second, he has to let his ego go and accept कि भाई leg fights में जो striking का game है उसका it is not going to work against Alex. And like I don't know, That bro. will be I the just whole लेकिन together different game only because yeah, I think ये rematch के अंदर Alex loses his belt against Izzy. And I want to predict that this happens in the 4th round. And it's if it doesn't happen in the 4th round, तो ये completely decision पे जाएगा. And for that, Izzy has to win all 4 rounds. But क्योंकि the thing is, even usually controversies इसकी वजह से ये होती है कि people win like three rounds और फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं the 3rd round was won by this guy or this guy. तो Izzy has to win all 4 rounds. And 5th round पे छोड़ना ही नहीं है. Usually. I think that's how Izzy wins. अगर वो जीतेगा तो भी either decision या तो फिर वो knockout करेगा in the 4th round. लेकिन ओवरऑल टाइमलाइन वाइज देखना तो व्हाट आई थिंक इज कि अगर इजी जीता तो इट वुड बी लाइक द कमबैक ऑफ द सेंचुरी टाइप वैसे सब Comeback of the century. हाँ, I don't मतलब think so. There's anything left to prove because 3 बार तेरे को हरा चुका है. This is the 4th वही time. इसलिए अगर भाई तू अभी नहीं जीता, that means something is wrong with you. comeback of the उसका century तो नहीं पर हाँ that would be at least saving your Comeback of the ass. century तो was Jon Jones का हाँ, अभी तो वही. लेके यार खत्म भाई अभी यार That comeback. is जाने के that is बाद like savage thug. So I think Izzy takes it. लेकिन इफ यू डोंट नो किक बॉक्सिंग ये दोनों एमएमए में अभी आए इजी वर्सेस पर हाँ लेकिन but see उससे पहले losing kickboxing 3 में to अच्छा, 4 हाँ. fights is okay but losing to the same guy again and again because of the same things is very bad. वही ना वही तो रीजन है कि उसका ईगो हैमर हो रहा है. Ego hammer over it. Yusuf looks so bad on his whole career thing. You know, one guy like defeated you 4 times. हाँ, that's the thing. You're defeating 4 लेकिन times is something okay but लेकिन शिट अगर इजी फिर से हारा तो what's left? पूरा टूट जाएगा बेचारा. See, ऐसा तो एज वी टॉक्ड अबाउट इट वो इंटरनेट पे बहुत एक्टिव. I mean, it will haunt him for his life and he'll become like what Daniel Cormier has become. He usually उसको कोई respect करेगा नहीं and people will keep throwing it in his face. कि इवन भाई- दो इतना Yeah, exactly. इट बिकम अ जोक बेसिक. That's the thing. You win, you become the thing. You lose, you become the joke. अभी it's like हाँ but usually ये कब होता है मालूम है? If you accept कि मैं हारा था हाँ चुपचाप कि भाई ये हाँ, मेरा ठीक है. गलती हुआ and I क्योंकि इसके पहले भी इजी हारा है and उसका मीम ऐसे बने नहीं. The thing why ये लोग इतना उसको उंगली हाँ कर रहे हैं मतलब कि भाई अगर तू एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो we will pound on the fact that you won't and accept. he's living in a delusion completely, you know. वो उसके इसमें जैसे वो बात कर रहा है जैसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को and the kind of things that he's talking about it completely shows कि कितना delusional है अभी and he's not ready to accept कि वो हारा है and he has to in order to you know come back he has to accept the fact that मेरे से ये गलती हुआ and he has to work on that. एंड ही हैज टू कम बैक विदाउट गाइनो विदाउट वो तो स्टेरॉइड्स. निकल गया भाई. पता नहीं भाई फिर से पता नहीं क्या है कि भाई इस बार तो नहीं यार मैं 3 बार हार चुका हूँ. वो तो पता चला फिर से बुक देखने मिला. मैं I don't think so that's what he's going to see क्योंकि वो सीख गया है भाई. अभी एक तो रिसेंटली ये भी हुआ ना फ्रांसिस नगानो रिसेंटली तो नहीं अच्छा थोड़ा फ्रांसिस का या फ्रांसिस का थिंग लाइक रियली bothers me. उसका उसका खबीब ने तो ऐसा बोला कि इट्स ओके इफ यू वांट टू मेक मनी देन गो टू बॉक्सिंग इफ यू वांट टू मेक लेगेसी क्रिएट लेगेसी देन यू हैव टू स्टिक टू एमएमए. No, I completely support Francis ये decision के अंदर. I don't know what Khabib is talking about, but see for a fighter उसका बट पहले एक्सप्लेन कर देते कि Okay, एक्चुअली so हुआ क्या था फॉर द वंस हु Francis डोंट comes नो. from Africa ओके and he really values his freedom a lot more. ठीक है? फ्रीडम इन द सेंस. Freedom in the sense कि his own decision ओके do whatever he wants. ठीक है? And उसको जो policies UFC थ्रो कर रही है उससे उसको मतलब नहीं है उससे.
his only demand coming into the contract, जो उसका contract खत्म हुआ, his only demands were कि मेरे को तुम खुद का स्पॉन्सर रखने दो, ठीक है. यूएफसी डिनाइड दैट कंप्लीटली कि भाई तेरे को तेरा खुद का स्पॉन्सर नहीं मिलेगा कोई भी. देन दिस गाय सेड कि ठीक है तो मेरे को 250 grand का ये दे दो, क्या बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज द फाइटर रियली नीड्स दैट. एंड व्हेन यू आर उतना हाई लेवल पे, आई मीन इट्स नॉट क्रेजी टू आस्क फॉर समथिंग लाइक दिस, ठीक है. यूएफसी डिनाइड इट. ही वाज लाइक कि ठीक है ये भी नहीं करना तो डू वन थिंग कि जो मेरा पेपर व्यू कट है, सो यूजुअली अ फाइटर जब भी वो मेन कार्ड पे रहता है ही गेट्स अ पेपर व्यू कट, ठीक है. तो ही इज लाइक $10 पर पेपर व्यू सेल नहीं चाहिए मेरे को $25 पर पेपर व्यू सेल कर दो. यूएफसी डिनाइड दैट. हर चीज में बना हिज ओनली डिमांड वर कि मेरे को स्पॉन्सर दो खुद का, मेरे को या तो मेरे को ये दे दो, हेल्थ केयर दे दो 250 grand का, या तो फिर $25 कर दो पर पेपर व्यू सेल फ्रॉम 10. मतलब हर चीज यही जस्टिफाई कर रहा है कि ही नीड्स मोर मनी, नो मतलब एटलीस्ट टू फाइनेंशियली कवर हिम. लेकिन फाइटर्स वो पे तो सीन फिर ये भी है ना ठीक कि है, वो लोग को हर एक बट थ्रू आउट दिस टाइम ही सेड कि मनी वाजंट द इशू. मनी इजंट द रीजन कि हम लोग एक चीज पे आके बैठ रहे. वो मेरी हर ये everything that I'm asking for is being denied by them. और ये मेरे हाँ सभी requirements aren't crazy. हाँ, मतलब These दैट are इज लाइक pretty, बेसिक लेवल फॉर अ yeah, फाइटर हु इज ऑन दैट लेवल. yeah, he's on that level and he completely has like the right to ask for what he's asking, and UC completely denied it. So he was like कि at least मेरे को कोई advocate दे दो जो board meeting में बात कर सकता है. UC denied that as well. So he was like completely, I'm out of it. The thing is that ये ऐसा नहीं था पहले से यूएफसी का रिलेशन फ्रांसिस के साथ ऐसा नहीं था. यूएफसी तो उसको मीट राइड कर रहा था बहुत गंदा वाला. सी सो व्हेन ही डेब्यूट इन सो व्हेन फ्रांसिस डेब्यूट इन यूएफसी, मतलब कंपनी तो उसके पीछे कंप्लीटली पागल थी, ठीक है. They even started comparing his punching power to sledgehammer or being hit by a Ford Escort, right? वो तो अभी तक हाँ हाँ चल हाँ, रहा वो And हॉर्स they पावर were वाला like थिंग. dick है लेकिन riding वो it भी इंसेन completely. है भाई, उसका नकल पता नहीं It कैसे is, क्रैक it is, करता है. it is, it is, and that's something that set him apart. And UC knew that he can sell it. सेलिंग पावर. ठीक है, ये बहुत ज्यादा सेल था. So UC started doing it. Now उसको ना UC क्या कर रही थी, बहुत जल्दी बहुत ऐसी फाइट्स दे रही थी जो लग नहीं रहा था कि he could win, ठीक है. And that's what happened against Stipe Miocic जब भी उसको UFC का टाइटल फाइट ऑफर हुआ, ठीक है. The thing the thing was कि यूसी ऑलरेडी सोच चुका था कि ये स्टीवी मियोचिच को हरा देगा एंड ही इज गोइंग टू विन. वो लोग सोच चुके थे कि उसके बाद हम लोग को कैसा कैसे कैंपेन करना है फॉर दिस, ठीक है. एंड दे वर लाइक कि यू हैव टू लिसन टू अस, फ्रांसिस को बेसिकली. और फ्रांसिस फिक्सिंग नहीं, फिक्सिंग फिक्सिंग इन द सेंस कि लाइक फिक्सिंग वाले कि वी बैकिंग यू अप, डू व्हाटएवर वी से, जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो करो, एंड दिस इज इन द हाउ वी फेवर विन ऑफ बोथ टुगेदर. या द, नहीं इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ देम. हाँ, it's a win-win for both of them. अच्छा, I thought you were talking about नहीं नहीं the ना, opponent. Yeah, so they were like, we will back you up. Just do the things that we ask you to do. ठीक है. And वो लोग तो like literally ऐसे सोच चुके थे ये जीतेगा तो उसके बाद हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है. But it didn't go in his favor, ठीक है. And अभी फ्रांसिस एक महीने पहले फ्रांस घूमने चला गया था उसकी फाइट से पहले. एंड दिस इज व्हाट बॉदर्ड डेना अ लॉट, ठीक है. डाना वाज लाइक कि भाई तू सुन नहीं रहा. एंड दिस इज समथिंग दैट बॉदर्स डाना ऑलवेज कि अगर कोई फाइटर लाइक अपना खुद का डिसीजन ले रहा है उसको सुन नहीं रहा है, एंड द ही वांट्स टू द कॉर्पोरेट वांट्स टू बैक हिम, तो भी वो ऐसा नहीं कर रहा. एंड दैट्स वेयर द ग्रज रियली स्टार्टेड, ठीक है. एंड उसके बाद उसको ऑफर हुआ था अगेन डेरिक लुइस के सामने, एंड इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट फाइट्स इन यूएफसी हिस्ट्री, फाइट हेवीवेट फाइट्स. इवन जो रोगन सेड कि भाई इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट यूएफसी फाइट्स बिकॉज बहुत ज्यादा बोरिंग था. एंड what Dana White did is he completely blamed like Francis for it. कि भाई he was the reason देना का why. पॉइंट क्या था? डीना का पॉइंट was कि भाई मेरे को उसके साथ ग्रज हो चुका है, अभी वो जरा सी भी गलती करेगा I'll keep calling him back, ठीक है. And he sort of thought that this is like a finished fighter abhi completely. This is the set that we shouldn't be investing in. ठीक है. Now वो हाइटिस पे चला गया 5-6 महीना, दिखाई नहीं किसी को. एंड देन ही केम बैक एंड he ran through the division, ठीक है. वो literally ragdoll कर रहा था सबको. And this is when he started gaining so many fans. जो भी उसके like fan pages है जितने ज्यादा, the only reason is because
ये जो हाइट इसके बाद वो आया, ही लुक लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन एंड ही रैन थ्रू द होल डिवीजन, ठीक है. एंड दैट्स व्हेन हेवीवेट एंटर्ड इट्स गोल्डन एरा, जिसमें मैं बोल रहा था कि every single time heavyweight starts like looking like a good division is when you have a fighter like him, ठीक है. बट दिस टाइम समथिंग वाज डिफरेंट. यूएफसी उसको बैक नहीं कर रहा था, इतना ज्यादा वो उन लोग को रिजल्ट्स दे रहा है. यू थिंक कि ये लोग फिर से आके उसका ये पंचिंग पावर मेजर करेंगे सुपरा उपरा से. बट ये ऐसा कुछ नहीं हुआ. डेना वाइट डोंट गिव अ शिट, ठीक है. एंड जब भी वो ये यूएफसी टाइटल जीता भी फ्रॉम दिस गाय गाने, नहीं सिरिल खान के पास से नहीं था. इट वाज अगेंस्ट स्टीफे मिएचिस ओनली, आई गेस. हाँ, but he wasn't there. Dana White wasn't there to put the belt around him, and this really bothered him. और ये सबको दिखा भी, and post fight भी उसको ऐसा questions किया गया था. ये लोग क्लियर रखा था कि या कि we don't want him. और वो कॉन्ट्रैक्ट ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट जब उसने फाइट लिया था ना, तभी वो दो फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ था, ठीक है. उसके बाद उन लोग ने इसको सीरियल खान पे इसका दे दिया फाइट, and that was the last fight that he was on his contract obliged to fight, ठीक है. उसके बाद वो निकल गई. एंड ये लोग ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन. इट इज मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भाई देर आर सो मेनी फाइटर्स हु बैकिंग हिम अप एंड देयर सो मेनी एथलीट्स हु बैकिंग अप कि भाई ठीक है, यू डोंट यू नो यू स्टूड टॉल अगेंस्ट यूएफसी. ये कोई छोटी बात नहीं है. आई थिंक आई तो कम्प्लीटली लाइक अग्री विद व्हाटएवर ही डिड कि भाई यू नीड योर फ्रीडम. एंड उसके ये इतने ज्यादा भी कुछ क्रेजी नहीं थे उसके डिमांड्स. दिस इज समथिंग यू डिमांड यूजुअली. हाँ, but you shouldn't hold a grudge. That was something for something else वही against a very good fighter. कहना भी भाई the way he's acting up recently, I don't know क्या ही हुआ है उसका. रिसेंटली एज इन किस कभी की बात करते हैं रिसेंटली एज इन यही इसके बाद ही, ये incident। ये इंसिडेंट के बाद ही, लाइक इफ लाइक अ फाइटर इजंट रेडी हर टू. बर्थडे में भाई ट्रेन पे उन लोग की उम्र नहीं बढ़ती कभी. जो रोगन बेचते हैं ना टीआरटी में या नहीं everyone is, it टीआरटी shouldn't be the case, but कभी everyone is. बोलता है कि जवान दिखने के लिए वो सब लॉन्ग रन में बोलता है कि ऑल यू शुड डू इज टेक सम विटामिन एंड टेस्टोस्टेरोन एंड कीप वर्किंग आउट लाइफ लॉन्ग। Yeah, बोला ठीक है हमारे पास अनिल कपूर है but after that, like Francis अभी मेरे को लगता नहीं है वापस आएगा, but he definitely isn't under any लेकिन अब contract. वो फ्रांसिस अभी वो बॉक्सिंग में जाके तो इसे अपना वो लाएगा ना पंच। Let's see. I mean, I am backing him up in whatever he does, honestly. And it's kind of sad. I really don't want him to come back to UFC. Because if he chooses to come back to UFC, so the और thing is, ज्यादा no aggression. वो जाने दे, that's a different topic. But if उसको आने मिला तो it wouldn't be on his own conditions, ठीक है. That means कि उसने comply कर लिया है with the conditions that Dana White throwed him. And this is something I don't want. अगर उसने इतना बड़ा stand लिया है, I really want him to stick to it because this will create like a huge story long run के अंदर. And this is something that will change a lot of things. हाँ, this will prove the point. ठीक है, UFC के खिलाफ stand कर लिया तो भी you can have something in life. shows कि ये कितना easy है for a, so उसकी last fight के अंदर Francis was injured, ठीक है, but he could show up. Francis was injured, ठीक है, but he could show up. So he got a message from UFC कि if you don't show up और तू pull out करता है injury के basis पे तो we'll sue you. And this just proves कि how easy it is for a corporation to muddy the water around a fighter, and fans will buy it. लेकिन अभी ओवरऑल बिग पिक्चर में ऐसा लग रहा है ना कि यूएफसी का धीरे धीरे पावर थोड़ा कंट्रोल कम हो रहा है क्योंकि मैग्रेगर भी जो कर रहा था अपने टाइम में उसको भाई the whole reason मालूम है क्यों हो रहा है? The whole reason is उन लोग ने sponsorship प्राइम का select कर लिया. So that's going to be the downfall of UFC, भाई 100%. क्यों किया भाई पता नहीं चला भाई। एक तो न्यू ईयर 2023 शांति से आए थे अचानक आके मैं सुबह सुबह देखा भाई इसका लोगन पॉल का और डेना वाइट का था डेना वाइट ना स्टोरी था कुछ तो लोगन पॉल का कि वो साइन कर रहा है और मैं देख के भाई मैं डर गया कि भाई लोगन पॉल यूएफसी में आ रहा है शिट। और फिर दूसरे दिन पता चला प्राइम में इतना तो चलेगा ठीक है। Yeah, so सच्ची डेवास्टेटिंग मोमेंट। ठीक है
लेकिन इधर भी प्राइम के फैन थे, बताइए हाँ, टेस्ट even नहीं I था। want to taste it भाई, but मुश्किल है बहुत। ठीक है, इंडिया में आने वाला था थोड़ा बहुत, ये लोग का न्यूज़ है। ठीक है, एनीवेज, That's it. दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड गाइस। आई होप दिस इज मोर देन अ 10-minute वीडियो। Ah, ठीक है, थैंक्स I दिव्यांग, hope थैंक्स फॉर so. कमिंग दिस एपिसोड। चलो, thank you, Divyang. Bye.